नमस्कार। मैं हूँ जया सागर। मनाली के पास एक गांव जगतसुख से कुल्लू मनाली नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। एंड इट इज द टूरिज्म हॉटस्पॉट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बट आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत शांत है। लाइक बचपन से मैंने आज तक कभी मनाली को इतना शांत नहीं देखा था। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, due to all this coronavirus and all these tough times, मनाली भी शांत हो गया है। सो टॉकिंग अबाउट शांति, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सो लाइक, am I audible? Because I need to check if I'm audible so that I can start with why am I here, and मैं आपके साथ जो कंटेंट शेयर करने के लिए आई हूँ will share. Right. So, yeah, so we will begin. So, as my introduction says, I'm a National Youth Awardee for Research and Innovation by the Government of India. And it is the title that describes me overall. Okay, thank you, Rohan. I'm audible. Okay, so, right. Okay, yeah, right, I'm audible. Thank you. So I'll start with my journey with science. इतने मुश्किल वक्त में जब हम सब यही सोचते रहते हैं कि अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन क्यों नहीं बनाया, या इतने सारे साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, सो व्हाई डोंट वी हैव अ वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस येट? बट एक चीज जो हम हमेशा मिस कर जाते हैं, हम सब कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, बट क्या हमने कभी उन साइंटिस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस पहले दी है? कोरोना वायरस आने से पहले क्या हमने वायरोलॉजी के किसी साइंटिस्ट को, डू वी इवन नो देम? डू वी इवन टॉक अबाउट देम like we talk about other people, like we talk about cricketers, like we talk about actors, like we talk about people in media? Have we ever talked about scientists this much? Never. तो साइंटिस्ट का काम तब शुरू होता है जब पूरी दुनिया किसी मुसीबत में होती है या हमें कुछ नई चीज की जरूरत होती है। सो मुझे भी बचपन से कुछ ऐसा ही करना था। आई वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट सिंस आई वाज अ लिटिल गर्ल। इन फैक्ट जब मैं क्लास 6th में थी तब से मुझे साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। यू नो, लाइक डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, छोटी छोटी चीजें used to inspire me. Not just me, I guess हम सभी को बहुत अच्छा लगता है because we can relate. So class 6 I started to participate in small competitions with science, and I went for the district level competitions, state level competitions, national level competitions while I was in class 10th. And then I won various competitions in the field, as my trophies in the backdrop tell you, because yeah, right. So class 10th mein I went for national level for the first time, National Children's Science Congress, and that was the time I met hum sab ki scientific inspiration, Dr. APJ Abdul Kalam. And when he says that you have wings, so you should fly, you feel it, you want to fly with his words of wisdom. So that was how, you know, my motivation was clear and I was re-energized to become a scientist. So then after it, 11th 12th mein I took non-medical sciences and I pursued. But when I was in 12th, okay, मनाली अपने टूरिज्म के अलावा एक और चीज के लिए फेमस है, एंड दोज आर apples, right? हम सब Himachalis, non-Himachalis, all of us love apples, and an apple a day keeps the doctors away. और एप्पल की जो ग्रोथ है वो मनाली के लिए सिर्फ हेल्थ नहीं बल्कि इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है. So I belong to a family involved in apple production, and you know there is this tedious thing that we do during this season
ऑफ मार्च एंड अप्रैल, जब पॉलिनेशन होती है एप्पल्स में, तो पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए वी नीड मोर हनी बीज, एंड टू गेट हनी बीज व्हाट वी डू इज, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके यूज होते हैं, बट हमारे यहाँ पे व्हाट वी डू इज वी टेक पॉलिनाइजर फ्लावर बैग्स, जो हम एक प्लास्टिक के थैली में पानी, थोड़ी सी चीनी और साथ में कुछ फूल डाल के वी हैंग इट ऑन द एप्पल ट्री, एंड दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ हनी बीज. हनी बीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स फॉर द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन यानी कि परागण प्रक्रिया, जिससे कि जो फूल है वो सेबों में कन्वर्ट होते हैं. सो टू इंक्रीज दैट, बिकॉज जितनी ज्यादा परागण की प्रक्रिया होगी उतने ज्यादा सेब जो है वो पेड़ पे उगेंगे, और जितना अच्छे से परागण होगा उतने अच्छे सेब की क्वालिटी होगी. सो टू इंक्रीज दैट, इंडिया में हम वो पॉलिनाइजर बैग्स लगाते हैं, जैसे मैंने बताया, प्लास्टिक के थैले में, और वो एक पेड़ पे 15 से 20 बैग्स हम टंगा देते हैं, एंड दैट रिक्वायर्स आवर टाइम, दैट रिक्वायर्स आवर एनर्जी, एंड दैट रिक्वायर्स मनी, एंड राइट, you're using plastic, so that's bad. So to इंडिया में हम वो करते हैं. चाइना में व्हाट दे डू इज, वो एक एक इंसान खुद से पेंट ब्रश से एक फूल का पोलन दूसरे फूल में ट्रांसफर करते हैं. सो दैट्स व्हाट वी डोंट डू हियर, बट या इट इज अगेन वेरी टीडियस. सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम आई यूज्ड मस्टर्ड. मस्टर्ड यानी कि सरसों. सरसों का साग और मक्की की रोटी ऑफ कोर्स इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बट सरसों के फूल और सेबों के फूल में जो फ्लावरिंग का पीरियड होता है वो भी सेम होता है, एंड आई यूज्ड दैट थिंग. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि हनी बीज का फेवरेट कलर होता है येलो. डू यू नो दैट? जो हनी बीज होती हैं, दे लव द कलर येलो एंड दे लव येलो फ्लावर्स, सो दे कम टू येलो फ्लावर्स ऑलवेज. So since I had this scientific tinkered mind, I'll say, so when I was in class 11th 12th, it was around 2013. So I was in 11th, and I wanted to do it, I wanted to experiment it, कि मैं सरसों यूज करके सेब की पॉलिनेशन कैसे बढ़ा सकती हूँ. So I tried planting mustard in an apple orchard. तो अलग अलग पैटर्न्स में मैंने सरसों को सेब के पेड़ में लगाया. सो मैंने 10-10 पेड़ों के 4 बगीचे लिए, और उनमें अलग अलग तरीके से उस चीज को लगा के देखा कि क्या मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे अगले सीजन में. एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दैट द पॉलिनेशन इन एन एप्पल ट्री यूजिंग मस्टर्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, एंड दैट पैटर्न इज कि बीच में जो सेब का पेड़ है उसका गड़ा होता है, गड़े की बाउंड्री पे अगर आप सरसों लगाएंगे, so that will increase the pollination and the crop of apple by 25%. So 25% is a big increase in the apple crop, and more apple we grow. इसके साथ हमें सरसों तो फ्री में मिल ही रही है, like we can eat सरसों, और अगर हम सरसों नहीं खाते हैं और वो वहीं पे सड़ जाती है, तो it becomes green manure, which is a very good source of nitrogen. So that was about my project. That took me to Intel International Science and Engineering Fair in 2014, held at Los Angeles, America. So it gathered a participation of around 80 countries, and there were almost 1700, 1800 participants, young scientists from all over the world. हमारी इंडिया की टीम में हम 10-12 बच्चे थे, and all of them, like my team, like everybody in the Indian team had such great projects. I was the only girl from Himachal Pradesh to be there. I was the only girl studying in a government school. I've completed my education, my senior secondary, from Government Senior Secondary School, Manali, and I was the only girl from a government school to participate in that competition yet. So it was amazing. The feeling of Team India being flagged off by the former president Dr. APJ Abdul Kalam, जब मैं उनसे दूसरी बार मिली, so the Team India was flagged off by him, or we went for this competition that was held in May 2014 at Los Angeles. और उस समय जब मैं पूरी दुनिया के सभी young scientists से मिली, I felt कि the world of science knows no borders. हम सभी एक बार when we get into science, we work for the mankind. The technique I evolved, जो Himalayas में
मनाली में, आई वुड से एक छोटे से गांव में, इफ आई ट्राइड अ टेक्निक, that technique could be used in America, could be used in Washington, could be used in Japan, and anywhere around the world. So that feeling of working for the mankind is the biggest feeling that you get when you work with science. आप सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहे होते हो. एंड व्हेन आई सॉ ऑल दिस, आई वाज इंस्पायर्ड कि मैं बड़े होंगी तो मुझे साइंटिस्ट ही बनना है. एंड yeah, that was my take home message. But along with that, I won two prizes for India. One of them was the fourth grand award in plant sciences category, and also I won a special award, the AVASC special award for innovation and creativity. And in 2014 this competition held, and I came back to India, and I knew I have achieved something, and now it's the time to give back to the society. The exposure and the experience that I got, I wanted to share it with everyone around. So I started my NGO, Mangal Dayak. It is to promote girls, like all those rural kids, but especially girls in the field of science. So I started this NGO, and till now हम 5,000 से ज़्यादा बच्चों को पूरे हिमाचल में साइंस की फील्ड में वो अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, what all they can do, what all they should study, we have completed that. And also 2015 में मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से तीसरी बार मिलने का मौका मिला. इट वाज इन जुलाई as a keynote speaker in Rashtriya Avishkar Abhiyan. It was held in तालकटोरा स्टेडियम, और वहां पे पूरे इंडिया से 3,000 से ज्यादा बच्चे आए थे. एंड देयर वर सो मेनी eminent scientists, including our missile lady of India, Dr. Tessie Thomas, including Professor H.C. Verma. साइंस के हर स्टूडेंट को जिसने फिजिक्स पढ़ी है, दे नो कि डॉक्टर H.C. वर्मा इज लाइक भगवान ऑफ फिजिक्स फॉर ऑल ऑफ अस स्टूडेंट्स. एंड या, सिंस आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ नॉन मेडिकल, आई नो मेरा प्रोजेक्ट बॉटनी का था, तो यू वुड थिंक कि मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए था, बट आई वाज इंटरेस्टेड इन मशीन्स, स्पेस एंड मैथ्स, राइट? सो आई टुक नॉन मेडिकल, एंड I got admission in NIT Hamirpur, National Institute of Technology, and I got into the field of electronics and communication engineering because I thought electronics and communication एक ऐसी field है जो हमें हमेशा चाहिए, right? India needs electronics and communication because India needed high quality communication, because जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से all of us are trapped. Obviously मुझे पहले नहीं पता था कि कोरोना वायरस आएगा, but I knew that communication is going to be very important for the nation, as now it is proving to be. All of us can interact, and I'm so happy आप सब respond कर रहे हैं. It is thank you very much for all these lovely comments. And yeah, so as an electronics and communication engineer, और क्योंकि मैं मनाली से हूँ, और मनाली में टूरिज्म और सेबों के अलावा एक और चीज बहुत फेमस है, ट्रेकिंग. सो हर साल इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं जिन्हें ट्रेक्स पे जाना होता है. दे वांट टू क्लाइंब द माउंटेन्स, बट दे थिंक, ये हमारी जनरेशन के साथ वी हैव दिस, वी आर सो कॉन्फिडेंट कि वी नो कि हमारे पास गूगल मैप्स है, दैट्स इट, ये सामने पहाड़ है, इस पहाड़ के टॉप पे जाना है, विल रीच. सो दिस इज वन थिंग दैट पीपल इन आवर जनरेशन डू. लेकिन पहाड़ों में वी नो हिमालयाज दे आर नॉट ऑलवेज वेरी सेफ, और हर साल हमें न्यूज आती है कि इतने लोग या कुछ आए थे यंगस्टर्स, दे गॉट इनटू समथिंग, दे स्टक इन एन अवलांच, something happened, they deceased, they're dead, or they got attacked by wild dogs or something. So for that I made my another project that was funded by DST under the scheme of IEDC, and that project was an avalanche rescue belt, and that belt could help people who are stuck in an avalanche for a quick rescue. हम बहुत जल्दी उन्हें rescue कर सकेंगे. I used some ultrasonics sensors for that, जो बर्फ के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं. So अभी जो रेगुलर तरीके यूज किए जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हम एवलांच रेस्क्यू बेल्ट, जिसकी कॉस्ट 1,000 या 1,200 रुपए तक आएगी अगर आप वो बेल्ट पहन के ट्रैकिंग पे जाते हैं. सो यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम सो मेनी डेंजर्स एंड यू कैन बी रेस्क्यूड. फॉर दैट आई हैव माई पेटेंट अप्लाइड. सो मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगी, बट या,
That is the avalanche rescue belt I've been working on. And then engineering first semester में we all studied quantum physics. Quantum physics is like जो बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है अराउंड -200 डिग्री सेल्सियस. उस टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स हैं they behave differently. 11th 12th की physics में it starts basically quantum physics where we study about the particle nature and the wave nature of matter, right? The nature of duality. सो कि अगर लाइट है तो लाइट सिर्फ एक वेव नहीं है, इट इज ऑल्सो अ पार्टिकल. और अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ एक मैटर या पार्टिकल नहीं है, इट हैज अ वेव एसोसिएटेड टू इट. सो दैट इज क्वांटम फिजिक्स आसान शब्दों में. सो बेसिकली हम जो रेगुलर कंप्यूटर्स यूज करते हैं इनका आगे फ्यूचर में एक नया वर्जन आई वुड से जो हमारी सोसाइटी के लिए आएगा, second revolution in quantum technologies, and we'll have like computers, supercomputers, and then we'll come to a point after like 50 years or so for we'll have quantum computers. So my interest was into it और मैंने उस पर पढ़ना शुरू किया. और recently last year इसी टाइम ऑलमोस्ट 15th मई से 15th जुलाई तक मैं ऑस्ट्रिया में Johannes Kepler's University in Linz, Austria. I was working on my internship. I was there for 2 months and I worked on quantum computing. This is one field जो कि इंडिया में अभी इतनी एक्सप्लोर्ड नहीं है. And my professor is one of the pioneers in the field of quantum computing. आप सब इसे बेसिक गूगल करके देख सकते हैं कि what is it. It is too much into science. So I know I have like a few friends here who are not from science, so I understand. I would not go in details, but so yeah, I did my internship on quantum computing, and then when I came back I started to work more on it. I got 98% in my internship, and my professor said that he has never seen someone so smart as me, and that made me so happy and so proud for the country. And yeah, so with that I'm planning to pursue my studies in the field of quantum computing, but we don't have much of infrastructure in this field in India, so I think I'll have to move abroad maybe for my education. But the Indian in me will always come back and serve the nation. That is what I want to do. And also I know science sounds tough because there is a lot of maths involved, there is a lot of studying involved, but science has a lot of fun in it. I mean, I was just a little girl and I got so many opportunities and exposure of the world, I'll say. As in 2014 I went to US, and then in 2018 as a part of Indian youth delegation we went to China back in 2018, right? 2018 mein there was no coronavirus. So before that we went to China, where we visited a lot of companies, we visited a lot of research laboratories, and I felt कि चाइना में जिस लेवल पे रिसर्च पे काम हो रहा है, उनके सुपर कंप्यूटर्स और उनका वर्किंग स्टाइल is a lot different from India and is quite good. So I would like to share this experience when we went to Boni Fair in Guangzhou. Basically, we went to the shipping company, and since I was technically good, and when we had this session, वो हमें समझा रहे थे कि कैसे उनकी शिपमेंट कंपनी काम करती है, वो कैसे कैसी टेक्निकल चीज़ों पे दे आर वर्किंग, और मुझे कुछ डाउट्स थे. सो आफ्टर दिस सेशन आई टॉक्ड टू देम एंड दे सेड कि ठीक है आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस. एंड आई वाज लाइक नहीं, मेरा इंटरेस्ट इतना शिपमेंट में नहीं है. आई वुड लाइक शिपिंग इंडस्ट्रीज या मरीन इंजीनियरिंग, मेरा वो डोमेन नहीं है. आई एम इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड आई वुड लाइक टू परस्यू दैट. एंड इनफैक्ट हमारे वापस आने के बाद भी I got emails from them कि आप प्लीज हमें गुआंगझाओ में आप हमारी कंपनी में हमें ज्वाइन करिए. And I was like no, right, because if I want to work for my nation or I want to work for science,
I don't want to work for profit of, you know, some other firm. And that is one thing I feel is the reason of brain drain for India. इंडिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं. I mean, there are so many people who are working so hard in India, but due to some lack of importance या बहुत ज़्यादा competition होने की वजह से बहुत सारे लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं. But I would still say कि all of us should get back and all of us should work for our nation because हमारे देश ने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया है. So we should not abandon it just like that. But similarly, we should understand कि we need scientists, we need good scientists in the nation and for the nation. Because जब भी कोई आपदा आती है, we don't look at cricketers, we don't look at actors, we don't look at कि कोई और हमें उस चीज के लिए सहारा देगा. कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर हम मांग रहे हैं तो हम साइंटिस्ट से मांग रहे हैं, राइट? बिकॉज वी नो कि वो कर सकते हैं एंड दे आर द ओनली पीपल हु नो अबाउट इट. बट अगर हम उनको उनकी रिसर्च के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं देंगे, अगर हम देश के साइंटिस्ट को पनपने ही नहीं देंगे, सो हाउ वुड वी एक्सपेक्ट कि दे विल गिव अस फ्रूट? So I would say if you know a scientist around you, you should respect them because this is a tough field, right? I know all of the occupations are difficult, but yeah. So yeah, that's one thing I wanted to say. And accept it now, I guess I'm open to many questions because this is my final semester of engineering. और मैंने बता दिया कि इसके बाद I want to work in the field of quantum computing. And I hope तब तक इंडिया भी इस रेस में आ जाएगा कि वो भी quantum supremacy achieve करना चाहे. And then I can get back to my nation and work in this field and you know, like achieve great things because the field that I want to work is on quantum optics and bioimaging. So with that, हम ये जो वायरस है जो सबको तंग कर रहा है, हम उसको it is like making high level of microscope जिससे हम उस वायरस को देख सकेंगे, और अगर हम उसे देख सकेंगे तो उसे खत्म करना हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा. So that is why I want to work in this field, and this field can benefit the society so much. So let's see how things work out. But फिलहाल हम सब लॉकडाउन है. मैं बहुत सुंदर जगह पे लॉकडाउन हूँ. आई एम इन मनाली एंड इट इज लिटरली paradise on earth, I'll say, and it's beautiful and yeah, I'm loving it here. और आपकी जो भी doubts हो तो please you can ask. I mean, if there's anything I skipped or you felt I skipped. Also I would like to add कि अभी हम सब लॉकडाउन पे अपने घरों पे हैं, but we should not lose hope about it. I mean, this is such a great lesson for our generation to learn. जिस तरीके से हम इतने आराम से कैफेटेरिया पे या किसी रेस्टोरेंट में पैसे उड़ा देते थे, नाउ वी शुड नो कि वी शुड सेव मनी फॉर द हार्ड टाइम्स. मतलब हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए. So we should be a little more prepared for the worst to come, and we should not waste time. And just like me, I'm working on various courses online now through Coursera. There is Udemy, there is EDX. So आप अपनी मनपसंद की फील्ड पे पढ़ने का आपके लिए ये टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं. And also here I have a question. With the problem of climatic change in mind, what according to you will be the future of apple cultivation in and around Manali? Okay, that's interesting. So hi Arjun. In and around apple cultivation, it requires its chilling hours. एप्पल को एग्जैक्टली बर्फ पड़े ना पड़े, बट उसको जो फ्रीजिंग टेम्परेचर का टाइम चाहिए वो दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एप्पल क्रॉप. एंड टाइमली रेन एंड टाइमली लाइक द प्रॉपर सनलाइट एंड एवरीथिंग. सो हर क्रॉप की तरह एप्पल क्रॉप भी क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होगी. बट as I'm a person of science, I think of hope. So we can actually now modify the basic apple trees, the basic species, into something that can tolerate higher temperatures
or that can be, more rigid against the changes in climate or chilling hours. So that can be achieved. But crop is very sensitive to गलत टाइम पे जो ओलावृष्टि हो जाती है या बारिश हो जाती है या गलत टाइम की जो स्नोफॉल होती है, उससे ऑब्वियसली हमारी जो क्रॉप है वो इफेक्ट होगी. बट इट इज इवोल्यूशन, right? So these species of apple are also evoluting, and we can, with the use of technology and with the use of proper science, maybe the agriculturist could do a lot more, the scientists in that field could do a lot more to make them better, like, so that they can make the trees stronger against the climatic changes. So I'll take the next question. I hope I answered your question. So next is, hello Harish, how you see the future of education, especially technology in India? इंडिया के IITs, NITs, IISCs टेक्नोलॉजी की फील्ड में माने हुए इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक IISCs, आइजर्स, नाइजर्स, हर जगह की इंडिया के जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, दे आर डूइंग अ लॉट टू प्रमोट टेक्नोलॉजी. बट सिर्फ इंस्टीट्यूट्स ही हर चीज नहीं बना लेते. आप सबने मूवी देखी होगी मिशन मंगल. थ्रू दैट वी गेट दिस लेसन कि द साइंटिस्ट्स इन इंडिया हैव टू वर्क इन द मिनिमम ऑफ व्हाट दे गेट. मतलब दे इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम जीरो से शुरू करके आपको 100 रुपए की चीज 10 रुपए में दे दें. Sometimes we have to give them an open hand to work, so that, some funds so that they can work, some motivation, some importance in the society that they can work and provide you with better results. So future of technology is not just what the institutes are doing. It is also on us. What are we doing? Are we helping it? Are we promoting it? अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है या आसपास कोई बच्चा है, अगर वो आपसे कोई क्यूरियस सा क्वेश्चन पूछता है कि चांद का साइज क्यों चेंज होता है, या अगर वो आपसे कुछ पूछता है कि ये मक्खी ऐसा क्यों कर रही है, ये फ्लावर पे नेक्टर लेने के बाद ऊपर क्यों उड़ रही है, और आप उसका कुछ भी आंसर दे देते हो, इट वोंट हेल्प. अब वी हैव गूगल, वी हैव फोन्स. अगर हम टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो बचपन से ही बच्चों में वो चीज वी हैव टू पुट इन कि वो चीजों को टेक्निकली सोचें. एंड फॉर दैट, if they are curious, answer their questions right. So that is one thing, as human, like as regular members of society, we can do. And the government can of course do a lot to increase technology in India, and that is another topic. So yeah, hi Rekha, you yourself are a like big person asking this, what's your future plan? As I said, I want to become a scientist and I want to work for the nation, and I want to work in the field of quantum computing and quantum technologies. So let's see where the destiny takes me. So, okay, Harish, do you think that brain drain will be limited from India in coming years? Well, कोरोना वायरस के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है उससे तो ऐसा नहीं लगता, बिकॉज बहुत सारी बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू एक्सेप्ट. इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को अच्छी जॉब्स देना, इट इज नॉट पॉसिबल बाय द गवर्नमेंट. सो इफ वी हैव मोर एंटरप्रेन्योर्स इन द कंट्री and we have good investments in the country and they capture the brain of India in India, then as you say, brain drain nahi hoga. But agar aisa nahi hota hai, agar opportunities nahi milengi, so the good brain will have to go out. They won't have any other option, right? So hi Shubham. Okay, so you're a good friend and you ask, what's your opinion on the depletion of the true form of nature due to pollution and how world can solve this problem? Any reviews? Okay, so देखो ठीक है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम तो है ही, एंड पोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, सो दैट इज गोना हैपन. बट हमें अपने लेवल पे वी हैव टू प्रमोट बेसिक कल्चर्स जो जिनसे पोल्यूशन कम होता था. आई वुड से मतलब हिमाचल में तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट वी हैव एवरीथिंग ऑन अ लो पोल्यूशन वर्जन, बट वी डोंट यूज इट.
राइट. अब जैसे जो डिस्पोजेबल पत्तल होती है, कटोरियां होती हैं, दे आर बीइंग बैंड इन हिमाचल, एंड वी आर नॉट यूजिंग द टेक्नोलॉजी कि हम प्रॉपरली एज एन एंटरप्रेन्योर और एज एन इंडस्ट्री, हम जो हमारी पत्ते से बनी हुई पत्तलें होती थी, वी शुड यूज देम. अगर हम उन पत्तलों का यूज करेंगे तो वी कैन डू आवर पार्ट, बट आर वी रेडी टू डू आवर पार्ट? So we can curb the pollution by using and getting back to the technologies with a good mindset. हम हम नहीं करते हैं, and that is wrong, right? It is not just for the government, it is for us, for the people as well, to do things right. Okay, so yeah, agar if you have any other doubt, Shubham will discuss it on phone, right? So yeah, I'll take the next question. Abhyuday, why are private engineering colleges gradually losing their importance in our nation? Well, not really. Private engineering colleges are doing, in some fields, they are doing really good, and they are providing students with good opportunities. But also, as we have a tag of, government colleges, especially IITs, NITs have set the level. But I would say I'm studying from NIT. My brother has studied from Thapa University, and the way he studied things was, I feel, was really advanced than what I studied. So it is not about कि उनकी पढ़ाई में कुछ कमी है. It is maybe because उनकी फीस ज्यादा होती है और आप इनपुट से आउटपुट का रेशियो देखते हो, so you are like कि नहीं, they are not valuable enough. But to be honest, अगर आप पढ़ना चाहो तो it does not matter आप कौन से कॉलेज से हो. It matters more what do you want to do and how you feel it and how positive are you towards your studies. So yeah. uh, Next is, don't you think whether adaptability with climate change, quoting here your example of apple crop in Manali, we should think about the combat climate change. Of course, we will. We have to. In fact, we should. But दुनिया के हालात देख के अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ओवरनाइट हम चुटकी बजा के क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर देंगे. दैट इज द हार्श रियलिटी दैट वी हैव टू डील विद. आप अभी भी बाहर जाओगे, you'll feel like you'll buy a packet of kurkure or chips and they'll come in plastic packaging, and that will add to pollution, and that will ultimately add to climate change, and things won't change, right? It would take time. So for that, everything has to adapt. थोड़ा सा ascend से, थोड़ा सा ascend से, तभी will reach the equilibrium in the scientific term, and a balance in a layman's term will reach. And thank you, Neetu, for this question. I mean, yeah, I was expecting this question. I saw this coming. So Rahul, you asked this. What are you looking forward to do in this field? Any initiative, work, research, and something like that? In what field exactly? I mean, is it if it is about combating climate change? So, okay, if it is about combating climate change, then I would say yes. I'm trying my best to reduce my carbon footprint, and I avoid using plastics. I avoid doing things that will, add up to pollution. So yeah, but as such, any particular initiative or research on it? So I'm really sorry, Rahul, but I'm working currently in the field of quantum computing, quantum physics, and that is quite advanced to explore the space, and it is really necessary for high level bioimaging. So I'm into it, and currently I'm sorry, but I'm not working in the field of conserving environment. But yeah, I've done a few similar projects. I've worked on eco-friendly designs of hydropower projects. जैसे कि हम हिमाचल में we know कि hydropower projects की वजह से they sound to be eco-friendly, but उनसे जो जो problems होती हैं. So I designed an eco-friendly model of hydropower projects, and I was also working on a solar air heater, जैसे कि मनाली या शिमला, जहाँ पे धूप में भी अंदर रूम्स में ठंड होती है सर्दियों में. So for that,
I worked on a solar air heater ताकि हमें तंदूर का यूज कम से कम करना पड़े. सिर्फ पानी नहीं, हम हवा को भी गर्म करने के लिए solar energy को use कर सकें. So I worked on that, and we are planning to complete this design especially for schools, ताकि स्कूल में बच्चे, क्योंकि वो दिन दिन के टाइम में होते हैं, so we can provide them with a solar air heater, जिससे तंदूर की जो कॉस्ट है या इलेक्ट्रिकली हीटिंग, रूम हीटिंग की जो कॉस्ट है वो बच सके, एंड इट विल हेल्प द environment. Adjust, जब हम लकड़ी नहीं जलाएंगे तो it will help. So yeah, that's what I'm doing, Rahul. And yeah, need to banning only plastic use is not a complete solution, definitely, because only plastic is not causing the pollution. So we should have a plan for its management. Definitely, we should have a plan for the management of all the solid waste, not just plastic, because metal or glass or anything else that takes a lot of time to get decayed, and all the toxic elements. So we need a plan for management of all of it. And yeah, we will. The way India is trying to fight all its problems now, I hope in the very near future we'll get to a lot of solid waste management techniques. बट उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा एक चीज को समझना कि अगर हमें कूड़े को मैनेज करना है, वी हैव टू गेट इनटू वेस्ट मैनेजमेंट, वी शुड फर्स्ट लर्न टू सेग्रीगेट द वेस्ट. अगर अभी भी आप अपने डस्टबिन में गीला कचरा और सूखा कचरा, प्लास्टिक और मतलब वेजिटेबल्स के छिलके साथ में डाल रहे हैं, तो यू आर नॉट रेडी फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स येट. बिकॉज उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रीन, ब्लू और रेड बिन्स का मतलब समझना होगा, और उसमें किस तरीके से वेस्ट को मैनेजमेंट सेग्रीगेट करना है. वंस वी लर्न दैट, then we can manage all the waste easily. India will do really good in it. So yeah, next question is from Harish again. Do you think that students from a national institute like NIT, IIM and all should work for this nation, as if India is investing in number of students, so they should also have the courage to give back to the nation? Yes, that is very important. And yes, because IITs and NITs में बहुत सारी फैसिलिटीज हमें गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, एंड इट इज ट्रू कि हम सबको अपने देश के लिए वी शुड गिव बैक टू आवर नेशन, एंड थ्रू मेनी वेज many of us do try to do it, but because of the structure of things, it is not always possible for everyone to गेट इन टू द सिस्टम टू वर्क फॉर द नेशन. अगर किसी को पता है कि उन्हें ये काम करना है और वो पॉसिबल या वो अपॉर्चुनिटी उन्हें उनकी रीच में अपनी कंट्री में नहीं दिख रही है, तो देयर इज नथिंग बैड to go out and learn something or study something or work on something in any other country. But the fact is, because I would like to add this, हमें ऐसा लगता है कि जो लोग देश से बाहर जाके काम कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट. अगर वो देश से बाहर जाके काम कर रहे हैं और अगर वो अपनी फैमिली को कुछ भी पैसे भेजते हैं या उनकी जो इनकम है, इट इज ऑल्सो एडेड टू आवर नेशनल इनकम. ये चीज मुझे भी ऐसे लगती थी कि पीपल हु आर वर्किंग अब्रॉड आर बैड, but it's not like that. It was clarified to me by Dr. N. Parth Sarthi, who was an ambassador of India to US, and he told me that it is not always bad, because the money they send back home to India adds into the income of our country. And anyhow, if you get good opportunities to work abroad, you can, but we should never forget that we have to come back once again to the nation and work for it. So going for a little time out, I don't think is bad. I don't know, what do you feel about it? So people of India who are basically good in science and technology, they go to the foreign for better life only. Few sticks to it. So if you will get a chance in some other country, will you take it, or will you stick to India? Well, that's not at all a tough question. I mean, come on. If I get a good opportunity to learn, I learn and come back to my nation and get it to our nation. अगर कोई चीज हमारे देश में नहीं है,
तो हम बाहर जाएंगे, उस चीज को लेंगे और वापस आएंगे एंड विल फ्लरिश इन आवर नेशन. व्हाट इज सो रॉन्ग इन इट? आई मीन, अगर आपके घर में चीनी नहीं है, सो आप दुकान पे जाके चीनी लेके वापस नहीं आओगे? आप दुकान पे जाओगे, वहीं बैठ जाओगे? नो, राइट, यू विल कम बैक. So similarly, if I go abroad, I take what I want to study, I'll take the opportunity and I'll come back and add it to my nation. And with this, it has been 40 minutes. I have been talking to you all. So I hope it was a good session and you all enjoyed it. And thank you, Nitish, for this great question. And yeah, so long. So with this, the message that I want to give to all of you is, इस टाइम पे आप घर पे बैठे हैं, सो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए. डू राइट टाइम मैनेजमेंट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. घर पे बैठ के सिर्फ कोरोना नहीं फैलाना है, अपने आप को भी फैलने से रोकना है, राइट? सो डू सम एक्सरसाइजेस एंड take care of your spiritual health, do some meditation and take care of yourself, learn something new. अगर आपको कुछ नया सीखने का मन ना करे तो घर पे कुकिंग ही सीख लो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ट्रस्ट मी, अगर आपको खाना बनाने नहीं आता है, आपकी लाइफ बेकार है. Go learn cooking while you're home. This is a good time for our generation to sit back home and learn our basics from our family, our culture, our heritage. This is the high time हम अपने घर वालों से अपने कल्चर को अच्छे से सीखें और अपने अंदर अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करें. So thank you so much, and I'm really happy, I'm really thankful to Think India for this wonderful platform that you provided me. And here I shared a lot of my ideas and views with you. Thank you so much, everyone, for being such a great audience. And I hope we'll stay connected. You can find me on Facebook. You can find me on LinkedIn with the name of Jaya Sagar. And stay connected if you have any doubts or any views or suggestions regarding, so we can work. And thank you so much. Thank you, Think India. Thank you, everyone. And stay home, stay safe. We gonna fight coronavirus and India will win. So bye-bye.